हाई फाई टू ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई व्यूअर्स। सो आप लोग कैसे हो? कैसा लग रहा है? मतलब आई गेस सबको तो बहुत गर्म में लग रहा होगा। अभी तो समर का टाइम है यार, टेम्परेचर भी 40 प्लस हो रहा है, कहीं पे 35, कहीं पे 40 प्लस 41। तो कैसे गर्मी में क्या कर रहे हो आप लोग? जो जॉब सीकर्स है आई गेस, वो जो सर्चिंग फॉर जॉब्स, जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे होंगे, तो कैसे आप लोग मैनेज करो इस गर्मी में, ज़रूर कमेंट करना आप लोग। तो मैंने फिर प्रीवियस वीडियो में ना आप लोगों को शेयर किया था कि कैसे मैं इमेजेस यूज़ कर सकता हूँ डिव टैग के अंदर। तो अभी मैंने सोचा कि उसी को मैं थोड़ा एक लेवल पे लेके जाता हूँ। तो मैंने अभी क्या किया, मैंने अब जो लिस्ट होता है ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके साथ मैं टेबल इंटीग्रेट किया हूँ डिव टैग के अंदर। तो मेरे 3 डिव्स है, उसमें मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ कैसे मैं उसमें लिस्ट टेबल यूज़ कर रहा हूँ। तो वही मेरा अभी इस वीडियो का पार्ट है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, कमेंट करना वीडियो में। मेरे ब्लॉग में भी मैं अपना कोड शेयर करता हूँ, तो वो भी आप वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो। तो आप लोग देखिए कि कैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, कैसे मैं लिस्ट में बहुत सारे जो लिस्ट का जो टाइप होता है वो CSS का प्रॉपर्टीज़ अलग होता है। CSS में हम लोग जैसे नॉर्मल टाइप लिख देते हैं ना ऑर्डर अनऑर्डर के लिए, बट CSS में वो अलग प्रॉपर्टीज़ होता है। तो वही चीज़ आप देखना कैसे मैं कर सकता हूँ। तो आप लोग देखिए जो कोडिंग का वीडियो है। ओके, सो टेक केयर। आप लोग खुश रहिए, अच्छे से खाना खाना पीना कीजिए, गर्मी में आपका सेहत ठीक रखिए, एंड टेक केयर। बाय। Hi guys. So in the previous video I have given some tasks, right? Did you remember? So in the previous video I have told that I have this image, okay, and how I can make these images in the center. तो मैंने previous video में एक task दिया था कि ये जो images है ये कैसे मैं center पे कर सकता हूँ. So that is possible by using मैंने previous video में दिखाया था by using few properties. So for that what I need to use, I need to use display block, okay, and then margin left auto and margin right auto, right? So yeah, this same thing I have shown you in the previous video also. So I have given this task also, like I have these images, how I can make these images in the center, fine. So what I have done, I have added this part. Now I have saved this. Now if I go to the browser and then refresh, you can see according to the div, the image has been located in the center, so it has been aligned center by using display block. Display the value of displays block, and margin left is auto and margin right is auto. So like this we can make the images center in CSS. So that was the task that I have given in the previous video. Let's see how we can insert the lists that we have seen in the HTML. Okay, so how we can do that list in CSS. So in list you have different list, that is ordered list, unordered list. Okay, so now I'll try to use that list by using the CSS property. So for that let me include the HTML, then head, title. I'm including one more size, that is exercise 8, fine. Then I close the title, and then I have a link, rel style sheet, fine, and href is equal to external css, sorry, exercise 8 dot css, fine, exercise 8 dot css, and then I'll close the head. Now here I have the body. I'll close the body, and then I'll close the HTML. Fine, I guess pretty awesome. So it is exercise 8
fine, and I need to create one more file and save it as exercise 8.css. Fine. So I have these two files, exercise.html, and in that I have an external CSS link, that is exercise8.css, and I have this file exercise8.css. So now in this div, what I'll try to do, I'll try to create a div, okay, and and yes. So I have this div. So within this div, I'll let me close the div tag. Fine. So now within this div, I'll try to create the UL. Okay. So I'll give the UL, then li uh, lists to be purchased on Monday. Fine. I close the li. Uh, I close the li and then I close the UL. Fine. So this is the UL unordered list. In unordered list, I have the li, and then this I'll close the UL. Now I'll save this. Now if I run this page, what I can see by default, the UL will have a disk. This is disk. So by default, it will come as a disk. So list to be purchased on Monday. So now I want this UL to have circle. So for that, what property I need to use? List hyphen style hyphen type. You can see here, okay, list hyphen style hyphen type. So this is this property I will be using for the ordered and unordered list. So in ordered list, the type I suppose I am giving circle. Okay, I'll save it. Now if I go to the browser and then refresh, you can see it will convert from disk to circle. Okay, so now in this part I'll use the table and suppose tr td and suppose mil. I'll close the td, close the tr, then here I'll close the table. Fine, I'll save it, go to browser and then refresh. So right now it is not like it's not showing nothing because there is no table. So one more thing you can do, I can put this part. Okay, let me cut it and then you will paste it here. And I'll paste it here. Okay, so this is the first li. Now in this li, suppose I'll use some class or suppose id, that is l12. Fine. So this is L1, and within this L1 I will have this table. So I will close this L1. Okay. So I have an ordered list. In ordered list, I have the first list, this one. Then in the second list, I want this table. So I want this table. I have this ID like L12. So what I'll do, hash L12, and here I'll use list hyphen style, that is type, and none. So I don't want any symbol to be displayed. Okay, I guess when I was teaching HTML, जब मैंने HTML पढ़ाया था, when I was teaching HTML at that time I have taught you that type none, that is also available in unordered list. So list style type this circle square, this all this you can use. Apart from that, you can use also none.
So now if I refresh this page, you can see here it's looking like it's a the only concept was that to make the table under the list. Okay, so it's looking like it's coming properly, right? You can see here previously the table was coming in this part. Now this is my first list. Now in that I will have all this list. So like that, I guess it's looking pretty good. So I have the circle and then I have all the table. So now if I want the property, if I want, I can add some property to the table. Suppose border, uh, 1 pixel solid, black. Let it be black only. And save it. Refresh. So you can see here border 1 pixel. Okay. So you can, if you want, you can add some like border, and then you can give suppose height width 100 pixel and width 100 pixel. Save it under the browser and then F5. So देख सकते हो कि you can add some pixels to it. So let it be 50. Okay, I'll save it under the browser F5. So this is the border. I will tell you not to add any border. I think previously what was looking, I guess it was looking good only. So what we will target, I'll target for the background color. I'll add only a background color that is light pink. I guess it's sober color. It's looks good. So only this one, fine. And for the whole div, what we can do, for this div, I can add, for the div, I can add a color. Suppose background color, green. Will it look good? Or gray? Let it be gray. Okay, fine. So I have this div, and within this div, I have this items. Uh, this is blue. Sorry, it's looking not looking so good. Fine, light blue. So I have this item list to be purchased on Monday, that is milk. Okay, I guess this is the like this is circle. Now within this ordered list I have one more list. Okay, but the type is none. आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो table का जो that's why I used to try to most exercise. No, this all these basic things only students are lacking behind. So this all these things you need to know. So ये मैंने unordered, I have used unordered list. Now within that I have a li. Now in this li, what I did, for this li I made the टाइप नन. ओके, मैंने यहाँ पे टाइप नन कर दिया और उसके अंदर मैं टेबल दिया. तो आप देख सकते हो कि आई गेस इट लुकिंग प्रीटी गुड. ये मतलब कोड में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द कोड, दिस इज आई हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट. नाउ दिस इज द फर्स्ट एलआई, दिस इज द सेकंड एलआई. कोड में क्या हो रहा है, ये पहला एलआई है, ये दूसरा एलआई है, बट इस एलआई का मैंने कुछ टाइप नहीं दिया है. उस टाइप उसके अंदर मैंने टेबल इंक्लूड कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली एक के बाद एक ऐड होता रहेगा. Okay, so it will keep on adding one by one, as if this is the list, and within that you have all the list, all the items. मैं टेबल में करूँगा तो it will look some good. So जैसे milk हो गया, then I can have bread. I'll save it browser F5 bread. Now suppose in this TD I can add 1 liter. Fine, I close the TD, and in this TD I can write suppose 500 gram, something, some data like how much quantity you want to purchase, the item and the you can say the item and the quantity. So here I can put some another one more tr. Okay, and here I will use th. Okay, so first one will be the items, and second one I can use the quantity.
Fine, it looks good, I guess. So if I save it, so you can see here, I guess it looks good. I have the items and I have the quantity. So these are the things that you need to purchase on Monday. So like that, milk, bread, then at least add three items. So then you can have sugar. Suppose let it be 1 kg. I'll save it, I'll go to the browser and then F5. तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैंने ये कंटेंट भरा रहा हूँ ये div भी बढ़ जा रहा है. When I'm increasing the table content, the div is also expanding. So like this I can give the like table within the list. I guess आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सर्कल है उसके अंदर ही ये सारा टेबुलर फॉर्मेट में शो हो रहा है. So like that I can put it in the div. If I want to put in the div, you can use the div. If you don't want without div also, it is possible. But एक लिस्ट है इसके अंदर एक टेबल है. ओके ऐसे ही मैं अगर if I want what I can do, I can give some height width to the div. Suppose with 100 pixel, let it be 200 pixel, and height also 200 pixel. Now I'll save it, I'll go to the browser and then F5. तो आप लोग देखो कि ये जैसे मैंने हाइट दिया है ना उसी हाइट पे ये शो करेगा. फाइन. तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हाइट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ. 500 कर दिया एंड इसको मैं 100 कर रहा हूँ. ओके तो 200 700. फाइन, आई गेस इट्स लुक्स गुड. तो अगर डिव को फ्लोट करना है तो आप वहाँ पे फ्लोट कर सकते हो. फ्लोट राइट, तो वो राइट साइड से आएगा. ओके, दिस इज फॉर द फ्लोट इफ आई यूज फ्लोट. फाइन. So all these the properties that we have seen in the previous video, मैंने ये सारा property previous video में दिखाया था. So all these properties I have shown you how we can like switch from left to right, right to left. So all these things can be done by using the float. तो अगर आप ऐसे float चाहते हो तो float कर सकते हो. अगर आप कोई पर्टिकुलर div देना है, div का height भी दे सकते हो. tables देना है तो table का दे सकते हो. So like this, all this possible by using the like different properties. For if you want to switch from left to right, you can use the float. For height width, you need to use height width property. Okay, so like this, this is done for the first div. Now we will go ahead with the second div. Okay, so I will add one more div. Fine, and I will add one more div. And now list will be purchased on suppose next day, Tuesday. Oops. Okay, next week purchase on Tuesday. So what I'll do, I'll try the same properties will be added. So let it make it a class. Okay, and I'm converting this thing to class because same property will be used. So no need to use this one. Li suppose li property pro. I'm using li pro, li property. Okay, and li underscore pro. Li property I need to use, I will use that li pro, and there I will change it to dot li underscore pro. Fine. So that for that class the type will be none, li underscore pro. So now this thing will purchase on Tuesday. So I have a table and I will add some value to the tables, right? Okay, so this is the table and div. Fine. I'll change the data. Let's see how it looks like. So this is the next div. Okay, so this is the first div, this is the second div. Now in this div, one more thing. In this div, for UL I have used this type circle, no? So what I'll do for this, I'll use the ID is equal to
li underscore type. Okay, and I will include one more. Suppose I will try to give some property to this id li underscore type. So li underscore type, fine. For this, I'll try with the square. I'll try with the square. Square, fine. Square, refresh. So you can see here this is coming in square format. Okay. So like this you can use the property. Fine. So like that you can use square. Then suppose let me try with the other part also. Let me first reduce the height. Let it change it to, this is the height, right? So let me change it to 150. Okay, fine. 150 is enough. So I'll use one more div. I'll try to use the type that we can use. I'm focusing on the type. So let me use one more div, and here no I can use the OL. Okay, ordered list. So OL, I'll try with the ordered list. So previously I have used some unordered list. Now I'll try with the ordered list. So ordered list li, and let it remove this part. Okay, I have this li, and then in this li it would be type none. Okay, and now what I'll try to focus on the OL. So previously for li I have this circle. Now for this OL I want list style type. I want this list style type to be upper Roman. You can see here upper Roman. Okay, so that's the beauty of the notepad plus plus. Automatically it find you the value. वो notepad plus plus में ऑटोमेटिकली वो शो कर देता है कि कौन सा वैल्यू आप यूज करना चाहते हो. तो अभी मैंने OL के लिए दिया है अपर रोमन. तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो आप लोग एक्चुअली सॉरी दिस इज फॉर द सीरियस पार्ट. तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि अपर रोमन जो है ना ये कैपिटल आई में आ रहा है. ओके, लिस्ट भी परचेज इसको मैं चेंज कर दूंगा डेटा, यू नीड नॉट टू वरी. अब देखो यहाँ पे अपर आई में आ रहा है. तो वैसे ही मैं अगर लोअर, अगर मैं इसको अपर की जगह अगर मैं लोअर यूज करता हूँ, लोअर रोमन, हाँ अगर मैं ये यूज करता हूँ, ओके, अगर मैं ये लोअर रोमन यूज करूंगा तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करूंगा आप लोग देख सकते हो कि रोमन लोअर रोमन में हो रहा है. तो वैसे मैं यूज करता हूँ अपर अल्फा, लोअर अल्फा. ओके, सो ऑल दोस थिंग्स आई कैन यूज हेयर. तो मैं एक बार दिखा देता हूँ. इन प्लेस ऑफ लोअर रोमन आई कैन यूज लोअर अल्फा. ओके, तो जो अल्फाबेट है इट विल बी इन लोअर लाइक ए बी सी डी लाइक दैट. अब उसके बाद मैं स्टार्ट तो वहीं पे यूज कर सकता हूँ कि स्टार्ट मुझे वहां से करना है. तो दैट यू कैन यूज इन द here like type we are already defining CSS. now here you can use with the start. तो स्टार्ट करने से वो अगर मैं 5 लिखता हूँ तो 5 से स्टार्ट होगा, जो HTML में मैंने दिखाया था वही चीज दैट इज यू कैन डू हियर इन CSS पार्ट. So like this you can use the type like lower alpha, upper alpha. So like this you can do using the list and table. तो मैंने सोचा कि list table बना के यूज करके let integrate these two parts and use it in a particular exercise. तो ऐसे ही में हम लोग यूज कर सकते हैं. मैं थोड़ा अभी डेटा थोड़ा चेंज कर देता हूँ. लिस्ट टू बी परचेज ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड यहाँ पे कर देता हूँ वेडनेसडे. फाइन. एंड मैं आइटम्स में क्वालिटी खरीद रहा हूँ. यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैं कर दिया सोचो कैरोट, और मुझे वो लेना है 500 ग्राम. फाइन. और फिर नेक्स्ट मुझे सोचो ये लेना है, मुझे सोचो ये लेना है राइस. राइस मैंने कर दिया 500 ग्राम. फाइन. एंड मुझे वीट लेना है, दैट इज सपोज 1 kg, लेट इट बी.
सो वेडनेसडे को मैं क्या खरीदूंगा? सोचिए, वेडनेसडे में खरीद रहा हूँ मैगी और नूडल्स। मैं वो सोचिए 1 केजी ले रहा हूँ। ओके, एंड आई एम परचेसिंग suppose potato, that will be 500 gram, and I am using जिन्हें ओके। तो अभी मेरा कंटेंट अलग हो गया, तो आप लोग देख सकते हो अगर मैं इसको रन करूंगा। आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग हो गया। लिस्ट भी परचेज ऑन मंडे, मंडे में ये आइटम्स है, क्वांटिटी है, मैं ये खरीद रहा हूँ। ये आप देखिए, आप देख सकते हो कि टेबलर फॉर्म में यूज कर रहे हो कि प्रॉपरली वो प्रॉपरली आ रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। जो वो फॉर्म में डेटा है ना, डिस्प्लेइंग प्रॉपरली, इट डजंट लाइक वो एकदम प्रॉपर सेट में आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक चीज कि मैं पहले इसका जो जो आप लोग प्रीवियस वीडियो देखे हो ना कि साइड बाय साइड आ रहा है, मैंने फ्लोट यूज किया था। आई वाज ट्राइंग टू डू दैट ओनली। सो इन द div I have some width, right? So I'll try to reduce it to 500। 500 reduce कर दिया। अब मैं in this div I will use float left। okay, float left। so now you can see it's like वो ज्यादा है इसलिए नेक्स्ट लाइन पे आ गया। तो अगर मैं इसको और भी रिड्यूस कर दूं ना, 400, तो आप लोग देख सकते हो कि एक ही मतलब एक एक के बाद एक आ रहा है। अब मैंने कुछ बॉर्डर नहीं दिया है div का, तो इसलिए वो शो कर रहा है। अगर मैं इसमें यहाँ पे कुछ बॉर्डर दे दूं, बॉर्डर, सॉरी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, डिस्टिंग्विश हो जाए, प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। मैं कुछ करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि डिस्टिंग्विश हो गया कि बॉर्डर मैंने ग्रीन दे दिया। तो ये फर्स्ट div है, ये सेकंड div है, ये थर्ड div है। ओके, तो यही चीज मैंने पहले भी यूज किया था फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करके। तो सिंस आई हैव यूज्ड फ्रॉम फ्लोट लेफ्ट, so it starts from left side. If I am using float right, so it will start from the right side. So like this I can use the float property. So I guess it's right now I guess it's okay. Like I have integrated the two parts, the list as well as the table. So in list I have two parts, that is ordered list and unordered list. So in for the type in CSS you can write like this. You can use this property list hyphen style type. So for unordered, you have types like circle, square, then disk is by default, and then apart from that you can use none. And in ordered, you have lower alpha, lower Roman, upper Roman, then number. That are all you can use. Okay. So I guess if you want, you can also make some changes. Like you can give some border. Okay. So previously I have shown with the text, then I have shown with the images, and now in this part I have integrated two things, list and table. So in each div I can use the list along with the table. So this is the div background color. I have a list and then the table with the background color of the table individually. तो मैंने टेबल का ही दिया है, तो सर जितना मैं टेबल ऐड करूंगा, how many tables I will add, it will have this background color। अगर जितना मैं टेबल ऐड करता हूँ इस पेज में, तो उसका सब बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक रहेगा। और div भी जितना मैं यूज करूंगा उसका background color light blue रहेगा। Okay, so this is all about। So still if you have been down, please comment in my video, and please thanks everyone for watching my video. Please keep watching my videos and subscribe my channel, comment in my videos. I used to share this code in my blog. You can go to my blog and see the code. Okay, take care, stay tuned, bye.